Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I request you just to avoid go outside your homes, because if we've seen that very fast that novel coronavirus that will be spread out into the other places. So unnecessary don't go outside your homes. Also avoid to go into the crowded places. And if it's necessary and have to go outside your homes, use the protective face mask covers. Just always wear take sanitizers with you. Always be wash your hands at a specific time of interval up to 20 seconds. So stay home and stay safe. The students, we are discussing about the chapter number 14, that is sources of energy, in which we have already discussing the previous two sections about the what is called energy sections, how it can be obtained, what are the sources of energy, what are the alternative sources of energy. These are the topics we have to discussing. So today we have to discussing about these are the topics about the solar energy, solar cells, tidal energy, wave energy, nuclear energy, geothermal energy. These are the topics of alternative. It is also called as a non-conventional source of energy. This we have to discussing onto the today's lecture. So in the previous sections we discussing about like fossil fuels are what, formations like coal is what, petroleum is what, biofuel is what, biomass is what. These are the topics that we're discussing into our previous sections. So we've seen that okay, what are the use of this need of to explore of this type of the energy resources, what are the alternative methods and what are the alternative sources. So generally if you seen that okay, with the increasing of the technological process, if you see that modern India's time, there is a very much uses of technology that we have to see into our nearby places, maybe in industrial areas, maybe defense areas, in science areas, medical areas, etc. where we have to see there is a technological process that can be seen. So our demand of energy that can be increased of day by day, because if you see that population that can be increases, it should be also cause a different type of the demands. So energy demand also have been increased to day by day. So our lifestyle is really mostly dependent on to the great extent of this type of this energy formation. So if we use the different type of machinery and the different type of equipments and other things which all are run through this type of the energies. So our basic requirements and our basic things which all are fulfilled by this type of the requirements of the energy. So while using of this type of energy, mostly we are dependent on the fossil fuels. So it is generally exhaustible natural resources. So while using this type of resources, it should be a limited in a stock, because it will take the millions of years to be converted into the form of fossil. So unnecessary, if we are using these things, in future it will be a very harm to us, it cannot be implemented. So instead of that formations of fuels, which are the different fuels that we have to use and increase our lifestyle as a instead of this type of the fossils. So it should be implementation and fulfill the requirement of energy of incrementation. We need to be work as well as more sources of energy, that is also called as alternative sources or maybe called as a non-conventional sources. So in which we implementation that if we start to like our ancestor time, so then it would be energy and protect our ecosystems. They have to be used energy and also have to be protect ecosystem. But for what that should be minimize and maximize the use of this thing, what we have to start to living with nature, how we can be implementation that form. But the idea is not being possible into the present area, because we are mostly using the natural resources and also harm them with the practice of natural resources. So we have to make new inventions for the creating of these resources as a part of the life faster and more comfortable to each and every living organism. So it is difficult for us to live without this type of comforts. So we have to use the specific formation of energy. So in which today we are discussing about first thing, that is called solar energy. About the solar you have to discussing in the previous section also. What is called solar energy, how it can be implemented, what is the advantage, disadvantage, that you have to discussing into already in your early chapters. So sun is a very important factors which generally generate the radiations of the innumerous amount of energy that present at a rate of the nearly 5 billion years and will continue after radiating into the next 5 billion years. Okay, so the radiations of this sunlight which is generated by the sun, which provide us the innumerous of the amount of energy presently from 5 billion years ago, and also
at this type of rate of energy it can be also provided in the next 5 billions of years of ago. So why we are not using the source of energy which is provided by the sun? Because it should be a unexhaustible formation like form. If we are using this type of substances, it cannot be exhaustible, unlimited quantity you have to use. So generally whatever the radiation of sun that can be provided, the n numbers of energy which can be provided, so only a small part of the solar energy which comes from the sun, that is called as the solar energy. So a very small part of the solar energy reaches the very outer layer of the surface of earth. Whatever the energy that can be comes out from the sun, the very small part of this energy of sunlight which can be reaches onto the outer crust of the earth's atmosphere. So nearly half of this type of radiation will absorb by passing through the atmosphere. Half of this type of radiation that can be atmosphere उसको absorb कर लेता है और कुछ amounts of rays जो होते हैं अर्थ के surfaces तक आते हैं. So many of sources like ultimately derive their mostly energy from the sun. Mostly ऐसे बहुत तरह के energy sources हैं जो इस sun के अंदर से अपने energy requirements का use करते हैं. So solar energy is a part of the inexhaustible nature resources. Solar energy क्या है? वो inexhaustible nature resources का part होता है. It can be used into the different kind of appliances such like the solar cooker, solar water heater, solar dryer, solar cell, etc. What are the equipments that should be based on the solar that can be used by this type of the formation? So India that receives a solar energy from a great part of the year. We have to use mostly the solar energy formation. So India recovers the energy of greater than 5,000 trillion kilowatt per hour. Whatever the energy that comes from the sun. So India that uses more than 5,000 kilowatt per hour, trillion kilowatt per hour's energy from the sun. So daily to average 4 to 7 kilowatt per hour meter square under the clear sky conditions, we can be obtain these forms of solar energy. So solar energy is that kind of equipments which can be easily implement the sources which have to be provided by the sun, the radiations of the sun which can be used by the different appliances and which can be generate the energy, that is a part of solar energy. So if you see that like we discussing about the solar cell before, if you have to think about when you are in the 7th or 8th standard, we discussing about the solar cooker. So black surfaces होते हैं वो absorbs करते हैं इस तरह के heat को, उसमें एक materials जो box होता है इस तरह का formation होता है, उस पर अलग-अलग तरह के glasses of mirror, plane और concave mirror use किए जाते हैं. reflection of light, refraction का concept से वहाँ पे heat generated होता है और food prepare होता है. ये solar cooker का formation. But if you see about the advantages and disadvantages of solar energy, there is a slightly, if we consider अगर solar energy का advantages से हम देखें तो use of solar energy that should be which is available into the very low cost or maybe free cost, because there is no any charges. The charges that should be whatever the machinery you have to be implemented by using the solar energy, that having the cost. But if you are using the solar energy, the one benefit is there is no any cost, it is a free of cost availability. And we can also have to be save the fuel gas instead of by using solar cooker. अगर आप सोलर कुकर का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का भी यूज करते हैं, तो आप दूसरे फ्यूल एनर्जी जो है उसका सेव कर सकते हैं. अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है कि दिस डिवाइसेस व्हिच आर बी नॉट यूजफुल इनटू द क्लाउडी डेज और मे बी इन अ रेनी डेज. अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो you cannot be use this kind of devices. So these devices are mostly not being useful into the rainy days or maybe into the cloudy days. Also, these devices are generally have to be useful into the certain times during a day. Continuous आप इसका use नहीं कर सकते. When the sunlight available, then you can be use this formation. So that is about the solar energy and advantages and disadvantages. Now the next topic that we are moving on, that is called as a solar cell. Solar cell के बारे में discussion करते हैं. Solar energy, solar cell is also be a component which can be used the solar energy. So solar energy is useful during a daytime. Solar cell के बारे में discussion कर रहे हैं. तो when you see that the solar energy which is also available only into the daytime when the sun is available into the sky. So these limitations of solar energy which is available only into the daytime. So if we have to be use this energy into the night, what we have to do? So instead of coming this problem, we have to be implemented the solar cells.
So solar cells convert the solar energy into the electric energy. Whatever the solar cells, it generally absorbs the solar energy from the daytime and generate the electricity into the night time. So that is one concept कि वो light energy को electric energy में convert करता है. So typical cell of solar which generally generate a voltage maybe 0.5 to 1 volt. अगर एक सिंपल सोलर सेल का भी कंपोनेंट है तो 0.5 से 1 वोल्ट की वो नंबर ऑफ सो इफ यू कनेक्ट द नंबर ऑफ सोलर सेल्स एंड व्हिच कैन बी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट्स बी रिक्वायर्ड सो अप्रोक्सीमेट 0.7 वोल्ट तक का जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट कैन बी इजीली प्रोवाइडेड बाय द सोलर सेल. सो सोलर सेल हैव नो एनी मूविंग पार्ट्स. इफ यू हैव सोलर सेल देयर इज आप देखते होंगे ना अभी मोस्ट ऑफली वो स्ट्रीट लाइट पे ऐसा एक प्लेट लगा रहता है और वहां पे बल्ब लगे रहते हैं और वो सोलर का यूज करता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सेल. So there is no any moving parts, but requirement of the maintenance of work efficiently without the any kind of focusing of device, it can be easily run by the solar cells. Okay, so they can be set up by the any specific formation as remote, and they have to be a dry, specific inhabited areas while the laying by a specific power transmission by maybe expensive, commercially and viable. So these are the solar cells which have been implemented as a part of the converting the electric formation. So this process of manufacturing of solar cell, अब देखते हैं कि थोड़ा सा expensive तो होता है. So it is expensive because it has something used substances which are generally having a following characteristics, and mostly they are made by the carbon and silicon. सिलिकॉन इज स्लाइटली सिलिकॉन जो होता है वो एक से ज्यादा सेल के बीच में इंटरकनेक्शन सेल के लिए यूज होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है, स्पेशल ग्रेड्स के यूज होते हैं. सो सोलर सेल्स जो होते हैं इस तरह के सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, इसकी वजह से थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं. अभी इसके अंदर बहुत तरह के ऐसे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो है वो सोलर सेल के अंदर यूज होते हैं. तो सोलर सेल्स आर जनरली यूज द मेन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज व्हिच कैन बी यूज्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड द प्रोब्स इनटू द मार्स ऑर्बिट्स. जो सैटेलाइट्स और ये सब हम लॉन्च करते हैं और जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है वहाँ जो एनर्जी चाहिए उसमें इस तरह के हम सोलर सेल्स का यूज करते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस का यूज करके उस ऑर्बिट के अंदर अपने एनर्जी का यूज कर सके. सोलर सेल्स मोस्टली अगर आप देखें तो दैट्स आर यूज्ड इनटू द रिमोट लोकेशंस व्हिच हैव टू बी ऑपरेटेड लाइक रेडियो है, टेलीविजन है या वायरलेस सिग्नल्स है, रिले स्टेशन है, वहाँ पे हम इस तरह का यूज कर सकते हैं. विच ऑल्सो भी हैव टू बी इम्प्लीमेंटेशन. ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स के अंदर यूज कर सकते हैं. मेनी ऑफ टॉयज व्हिच हैव टू बी रन बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ सोलर सेल. तो सोलर सेल्स के जो फॉर्मेशन जो पैनल्स होते हैं दैट शुड बी माउंटेड बाय अ स्पेशली डिजाइन a specific mechanism for the maximum observation of the solar energy. By using this type of concept we can use this light energy into the electric energy. In perspective the solar cells are useful. Now next about the solar cell and solar energy, we are moving on to the next topic that is called tidal energy. Tidal energy and the wave energy, these are the two energies. Also we seen that ocean thermal energy which we were discussing into the textbook, it is given there. We're discussing about only tidal and wave. Tidal energy, wave energy and ocean thermal energy, these are the part of the sea energy which have to be derived from the sea. In which first we discussing about the tidal energy. Tidal energy हम किसको कहते हैं? So tides जो होते हैं like level of water in the sea that rises and falls mainly due to the formation of gravitations pulls the moon and the splitting of earth. ओके, अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है मोस्टली उसके वजह से जो टाइड्स सीज के अंदर जनरेटेड होते हैं, पुल्स होते हैं, फॉल्स होते हैं, दैट हैव बीन सीन. द फिनोमेनन दिस टाइप ऑफ चेंजेस ऑफ द सी लेवल इज जनरली कॉल्ड एज अ हाई टाइड्स और लो टाइड्स. सी लेवल के अंदर ऐसे जो चेंजेस होते हैं उसको आप हाई टाइड्स या लो टाइड्स के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं. So difference of the sea levels is generally generated by these formations of the energy which can be generated from the high tides and low tides, which is called as a tidal energy, and which generally has to be constructed onto the dam across the narrow which having to be opening the sea. जहाँ पे सी का ओपनिंग होता है, डे का कंस्ट्रक्शन डैम आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस जगह पे हम इस तरह का जो फोर्स जनरेटेड होता है वहाँ पे हम इस एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं. तो वहाँ पे एक टरबाइन को आपको फिक्स करना होगा उस जगह पे जहाँ एनर्जी सी लेवल का आता है. दैट टरबाइन विच ओपनिंग ऑन द डे कन्वर्ट्स द टाइडल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो वो टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. सिमिलरली वेव्स एनर्जी, अब देखो ओशियन के जो वेव्स आते हैं, द वेव्स व्हिच कैन बी जनरेटेड बाय ओशियंस आर जनरेटेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स. जो विंड का फॉर्मेशन होता है, तो व्हाइल मूविंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स
we seen that the formation of the waves which can be seen into the oceanic waves उसको आप कह सकते हैं, and that can be generally generated across the sea through the via of wind formations, right? So the wave energy, that would be a specific proportion. Wave energy is a specific part of the proposition only the waves are very strong. ऐसे जगह पे हम उसको propagate कर सकते हैं. So the kinetic energy which is possessed by the huge waves near the sea shores and trapped by a specific formations of the areas where we can be implemented by this power and related to the turbine which can be implement the electricity. So wide variety of the devices which can be connected there and developed to be converted the wave energy into the electric energy, and the production of electricity it is also be useful, right? So ये जो tidal energy और जो waves energy है, both are having a specific formations to be as a part of the sea energy. उसको आप sea energy के process में that is also shown as a sea energy which is a part. Okay, next we discussing about the nuclear energy. देखो recent times के अंदर nuclear energy which is generated through the process of nuclear fission. Nuclear fission के process से nuclear energy जो है वो generated होती है, right? So nuclear energy जो है अभी recent times में हम देखते हैं कि बहुत सारे countries जो होती है वो war zone के अंदर तैयार होती है, तो ये generally dependent on to the war of nuclear segments पे वार करते हैं, nuclear missiles, nuclear bombs, etc. They are mostly discussing onto the nuclear section. So what is called nuclear energy? So nuclear energy is generally generated from the process of nuclear fission. Nuclear fission के process से जो है वो nuclear energy generated होती है. So in the process in which the nucleus is a very heavy atom, which is generally into the center of, like say uranium है, protium है, thorium है, this type of substances can be split into the formation of the lighter nucleus when the bombarded with the low energy of the neutrons on these formations of nucleus. So that process is called as a nuclear fission. Okay, जैसे हम देखते हैं कि हर एक एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कंटेन करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन करता है. तो बहुत ऐसे हैवी सब्सटेंसेस हो जाते हैं जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस का जो न्यूक्लियस होता है विच इज अ हैवी मास, अगर कंटिन्यूअसली आप उस पे न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डेड करते हैं तो वो धीरे धीरे अनबैलेंस होकर स्प्लिट होकर फट जाता है. तो वो जो प्रोसेस बनती है उसको न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कहते हैं. So when that should be burst, a tremendous energy is released. जैसे वो फटते हैं तो उसमें से बहुत tremendous forms of energy जो है वो रिलीज होता है. So during this process, the mass of the original nucleus, जो original nucleus का mass होता है, is just a little more than sum of the masses of the individual product. It is a very little, but whatever the sum of product of the masses, it should be higher. So it can be generated a tremendous amount of energy. The fissions of this type of atom, like uranium is one of the most important substances for the nuclear fission process. So the fission process of uranium that produce a 10 million times energy by the combustion of atoms of carbon from a coal. ओके, अगर आप न्यूक्लियर फिजन्स का प्रोसेस यूरेनियम को अगर आप बर्स्ट करते हैं तो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय कंबशन ऑफ एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम अ कॉल. कॉल को जो बर्न करते हैं उसमें से जो एनर्जी मिलती है उससे 10 लाख टाइम्स ज्यादा एनर्जी, 10 मिलियन लाख टाइम्स जो एनर्जी फॉर्मेशन जो होता है 10 मिलियन टाइम्स वो जनरेटेड होता है यूरेनियम के खाली एक सिंपल कॉन्सेप्ट से. सो द फिजन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक न्यूक्लियर फिजन्स, तो जो न्यूक्लियर इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो फ्यूल बिकॉज वो एनर्जी को भी यूज करता है, एनर्जी भी उसमें से आप डिड्यूस कर सकते हैं. सो न्यूक्लियर फ्यूल रिलीज द एनर्जी which is generally controlled rate through a self-standing of the fission chain reaction in the nuclear reactors designed by our electric power generation. तो इसके लिए क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस तरह के प्रोसेस होते हैं जहाँ पे इस तरह की जो ट्रिमेंडस हीट एनर्जी जो जनरेटेड होती है उसको कंट्रोल किया जा सके और उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हो उस एनर्जी में से. सो दैट रिलीज ऑफ दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड एंड प्रोड्यूस द स्टीम्स एज वेल एज जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी. तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो. तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर जैसे अभी देखो हमारा कंट्री जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का एक मेंबर है, एनएसजी का मेंबर है, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो न्यूक्लियस को ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं और उसमें से एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं. इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. सो न्यूक्लियर फिजन इज द डिफरेंस in the mass, like difference in the mass we calculated delta m,
and which सभी have to be between the original nucleus and what are the product nucleus जो product मिलता है and that get carried away from the E। तो इसको लिए स्पेसिफिक फॉर्मेशन जो था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी एनर्जी का रिलेशन बताया था, जिसको हम E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर इस फॉर्मूला से डिराइव करते हैं। सो एनर्जी इज जनरली अ पार्ट ऑफ डेल्टा m इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हमारे कंट्री के अंदर कहाँ है, विच इज द लोकेशन वेयर वी कैन सी द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इन अवर कंट्री। जैसे महाराष्ट्र के अंदर तारापुर वायर वी कैन बी सी, उसके अलावा राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो वहां पे राणा प्रताप सागर, वहां पे इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। तमिलनाडु के अंदर से कल्पाकम सबसे बड़ा जो है वो तमिलनाडु के अंदर कल्पाकम वहां पे सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर नारोरा, ऐसी जगह पे गुजरात के अंदर काकरापुर और जो कर्नाटक के अंदर कलगोई। दिस आर द एरियाज वेयर वी कैन बी सी द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस होता है, फिजन प्रोसेस न्यूक्लियर की ये जो ज्वाइनिंग ऑफ द हैवी न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस को ज्वाइन करते हैं मोस्ट कॉमनली बाय द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो है हाइड्रोनियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ये सारे इंप्लीमेंटेशन होकर इस हाईली एनर्जी को जनरेटेड करते हैं। तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ से जनरेटेड होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में कंसीडर की जाती है। चलिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, दैट इज अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो the energy which can be exploited by the steam, the energy which can be exploited by the steams trapped in the rocks near the hot springs areas of the earth, that is called as a geothermal energy, that is generally what called geothermal energy। तो जियोथर्मल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखते हैं कि जो रॉक्स का जो सरफेसेस बनते हैं, बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं, इसमें ड्यू टू द जियोग्राफिकल चेंजेस अर्थ का सरफेस देखोगे तो इट कैन बी चेंजेस इनटू द एवरीवेयर। So due to the changes of geographical surface, it can be seen that like molten rocks, बड़े-बड़े पत्थर जो है धीरे-धीरे पिघलने लगते हैं। So molten rocks formed deeper at a very hot regions of the earth crust. Earth का specific crust के अंदर काफी hot हो जाता है and then push upwards from the splitting of the trap into the certain areas that is called hot spots। वैसी जगह को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जहां पे इस तरह की एनर्जी जनरेटेड होती है। सो व्हेन दिस टाइप ऑफ अंडरग्राउंड वाटर दैट कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ द सरफेसेस व्हिच आर वेरी हॉट, लाइक हॉट स्पॉट के सरफेसेस में जब आते हैं तो वो क्या जनरेटेड करते हैं, दे जनरेट द वेपर, स्टीम जनरेटेड करते हैं, वाटर अगर वहां से आता है तो। So when they generate this type of steam as a formation, the steam in the rocks that routed through a specific pipe and turbine उसके through rotate करते हैं। When the turbine that can be rotated, will have to be implementation the useful generation of electricity। So by implementation of this substances, the few commercial viable areas और sites with the geographical location of energy that can be exploited। बहुत ऐसे कम जगह है जहाँ पे इस तरह के सेक्शन देखने को मिलते हैं, लाइक न्यूजीलैंड के अंदर है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स आर बीइंग सिचुएटेड ऑन जियोथर्मल ऑपरेशन, जहाँ पे अर्थ का सरफेसेस इतने ज्यादा हीट होते हैं कि उसमें से जो वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो स्टीम के फॉर्म में जनरेटेड करता है और उसको पाइप से डिराइव करके टरबाइन को रोटेट करके एनर्जी को डिराइव कर सकते हो। सो दैट इज द पार्ट। अभी ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, अभी न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है वो हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो व्हाइल यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, मोर एनर्जी दैट कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द अदर कन्वेंशनल सोर्स, दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी को यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के हिसाब से जो यूरेनियम है अगर आप उसमें से एनर्जी जनरेटेड करते हैं तो इट इज 10 मिलियन टाइम्स मोर देन एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंबशंस ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन ऑफ अ कॉल, उससे ज्यादा जनरेटेड करता है। सो एज कंपेयर टू द स्पेस रिक्वायर्ड जो होती है लाइक हाइड्रो एनर्जी का फॉर्मेशन है, वाटर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, उससे काफी कम जगह जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिक्वायर्ड करता है, जो हार्नेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स जो है वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में है। तो आई होप कि व्हाटएवर द सेशंस टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड क्लियरली। सो कीप अपडेटिंग योर नॉलेज by using different kind of mediums of the studies and the digital mediums, and whatever the question that is available in a form of exercise, write to the answers in your own words. Keep revising, keep updating, keep reading the textbook content first, then you have to use the different materials because mostly content that can be available in your textbook. So once again students, stay home, stay safe. Well, we meet tomorrow. We'll discussing about the new topic of the new chapter of your syllabus of NCERT Standard 10. Once again, keep updating your knowledge by using different digital mediums of learning. Stay home, stay safe, take care, and bye.